Assalamu alaikum students. Welcome you all in the first year and especially in the computer science subject. And all those who are new to computer and they are taking it for the first time in the first year, I want to tell them that computer science is not a difficult subject, but it's a matter of your interest, that how much you take interest in the learning computer. It is slightly different from of computer usage which you use in daily life, like you use mobile phone, laptop computers. That is something else, and studying computers is something else. So I hope you will hard work to get marks in your uh, ICS. So let's begin. First topic of the first chapter: overview of computer system. First of all, introduction to computer is what is a computer? What is a computer? All of us know it that it's a machine, right? But which type of machine it is? There should be some formal definition and some proper formal way of explanation of computer. So how I explain it, that it is an electronic device, right? And there are a number of electronic devices around us, but the thing which makes computer different from other electronic devices is that it is used for multi-purpose, right? Multiple application it has. हम इसके साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं. And the one thing is that it can be used for solving different problems, different kind of problems. And we also store and retrieve our work and data in it. If we do some work in the computer, on the computer, in the Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Excel, or whatever, we can store it for the future use, right? This is the very plus point of this computer device. Other things is that we can perform calculation, because basically computer was, the idea of the computer invention was to have a machine which which will be used to solve mathematical problems. Now we have calculator for the mathematical calculations, but the basic purpose of inventing computer was to perform calculation, and it can perform calculation of different types. In the calculator, we can just perform calculation for once, but in the computer, we can perform calculation and we can save it for the future use. Next, we can use it for entertainment purpose. So as I told you that it is a multi-purpose machine. It is a multi-purpose machine. So on the same time, we can use it for entertainment purpose, for study purpose, for internet surfing, and for calculations, and for our different life activities. We can use this machine. So this is the first thing, that what is a computer. The first ever computer which was called computer in the very early stage was called a Backus. It was like a keyboard, and you see there are balls in it, and these are rolled down for doing addition, subtraction, and multiplication. So this was the first computer. Then later on, in 1954, Mark I was called the first ever computer which was a real electronic machine. It can also perform some calculations, but it was a proper machine, electronic machine. And you can see this, that it is how huge it was. It was like huge as of entire room, and it produces a lot of heat.
This is an ENIAC which was invented in 1946, and it was better than Mark 1, but it also produced a huge amount of heat, and they were huge in size, very large in size. So that was their drawback, but for those people who were working on it, this was the big achievement that they have made a computer, invent a computer. And due to their hard work, today we have modern technology of computers. Modern computers somehow look like this. This is a desktop computer and this is a laptop computer. Desktop computers have some devices, external devices attached with that. Like this is a system unit, or in a normal way we can call it CPU, but the actual thing is system unit. The proper word for this box is system unit. Why? I can told it. I will tell you in the next lectures. Why CPU is not suitable for this thing. This is called system unit. Monitor, keyboard, mouse, speaker, printer. All these are externally attached with the desktop computer. But in the laptop computer, all input devices and output devices like mouse, speaker, mic, monitor, all these are attached with the computer. But if you want to uh, attach, connect printer or scanner, those are connected externally. But all other devices are within the computer. So these are the latest computers. Other computing devices. Computing devices are those devices which work like computer. Although they उनमें नजर नहीं आता कि ये कंप्यूटर है इनके अंदर, लेकिन उनके अंदर एक चिप लगी होती है जो उनको ऑटोमेटिक वर्क करवाती है, उनसे उनसे ऑटोमेटिकली काम करवाती है। उन सब मशीन्स को कंप्यूटिंग डिवाइसेस में इंक्लूड करते हैं। हमारी डेली लाइफ की मशीन्स हैं, ठीक है। आप देखें जैसे आप मोबाइल फोन, इट्स अ कंप्यूटर, इट्स अ फुल कंप्यूटर ऑन योर पाम। आपके हाथ में एक पूरा कंप्यूटर है, जिसे आप बिल्कुल उसी तरह यूज़ कर सकते हैं जिस तरह के आपके एक नॉर्मल कंप्यूटर, डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। These smartphones are not only a computing devices, but these are the full-fledged working computers. Other is washing machine. Washing machine has also a built-in chip microcontroller in it, through which when you set the program कि washing इस तरह करनी है, इसको इतने टाइम के लिए करनी है, the way you use it, it will answer you exactly what you want. आप इसका एक दफ़ा टाइमर सेट कर दें कि आपको जब टाइम इसका ख़त्म होगा, इसकी खुद बीप होगी तो आप जाके अपने कपड़ों को निकाल लें। ऑन द सेम वे एटीएम मशीन, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने एटीएम मशीन में अपना कार्ड डाला है, पासवर्ड डाला है, आपने किसी और के अकाउंट से पैसे निकल के आपके पास आ जाए, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये एक पूरा नेटवर्क है, इट्स कनेक्टेड डिवाइसेस, ऑल दीज आर कनेक्टेड डिवाइसेस, राइट? सो दिस इज ऑल्सो अ कंप्यूटिंग डिवाइस। आपके एटीएम कार्ड के ऊपर जो एक चिप लगी होती है, उसके अंदर आपका सारा डाटा होता है जो जिसे ये रीड कर लेती है। बट नाउ आप जो लेटेस्ट आए हैं उसमें आपका थंब इम्प्रेशन यूज़ होता है, आपको एटीएम कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपके थंब इम्प्रेशन जो है वो यूज़ करके आप अपने जो कैश है वो विदड्रॉ करवा सकते हैं, अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हाउस होल्ड थिंग इज माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में भी माइक्रो कंट्रोलर है। आप उसको जो टाइमर देते हैं, जिस तरह उसको जिस प्रोग्राम पे सेट करते हैं, वो उसी तरह काम करता है, राइट?
So these are called computing devices who have embedded computers in them. Now, all these are computers, embedded computers, whatever, but the what we have computing devices, but what are the basic operations of the computer? कंप्यूटर का बेसिक काम क्या है? जो भी कंप्यूटिंग डिवाइस है या जो भी कंप्यूटर है उसका बेसिक काम क्या है? बेसिक काम सब कंप्यूटर्स का एक ही होता है, ठीक है? तो बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। आप जो इनपुट देते हैं उसको प्रोसेस करता है, उसकी आपको आउटपुट देता है और उसको स्टोर करता है। देखिए इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस है? माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, माइक है। ऑल दीज आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। फाइन। आपने इनपुट दी कीबोर्ड के थ्रू, वो प्रोसेस हुई और डिस्प्ले हो गई आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? आपने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है, कोई लॉजिकल ऑपरेशन है, कोई मल्टीप्लिकेशन है, आपने कुछ लिखा है या कुछ बोला है माइक के थ्रू, सब कुछ आपका वो प्रोसेस होगा और सीपीयू के पास जाएगा, प्रोसेस होगा और उसके बाद सीपीयू के पास जाएगा, वो प्रोसेस होगा और उसके बाद आपका वो स्टोर, अगर आप उसे करना चाहें आप उसको स्टोर करें यूएसबी में, हार्ड डिस्क में, आपके पास सीडी ड्राइव है उसमें, आपके पास जितनी भी मेमोरी डिवाइसेस है वहाँ पे आप उनको स्टोर करें और वो आप जब उसका सारा काम आप कर लेंगे, आपने जब उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई तो आपने उसकी आउटपुट आपको शो हो जाएगी जैसे आप की रिक्वायरमेंट है, आपके मॉनिटरिंग पे, आपके स्पीकर में, आपके प्रिंटर में, जहाँ जिस तरह की आपकी आउटपुट है उस तरह की आउटपुट आपके पास आ जाएगी, राइट? तो आप स्टोरिंग डाटा, अगर आप प्रोसेसिंग के फ़ौरन बाद, इनपुट देने के फ़ौरन बाद अगर आप अपने डाटा को स्टोर करना चाहते हैं आप तब भी कर सकते हैं। आउटपुट शो हो जाए उसके बाद करना चाहते हैं उसके बाद भी आप इसको सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं अपने पास। ये आपका जो था टॉपिक बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर 1.12 टॉपिक ऑन योर बुक एंड यू कैन स्टडी इट फर्दर फ्रॉम योर बुक। आप इसे अपनी बुक से पढ़ें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यू कैन बेटर आस्क। और इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। और आप इट्स बेटर कि आप अपनी बुक से स्टडी, लेक्चर लेने के बाद अपनी बुक से उसको स्टडी ज़रूर करें कि अगर मेरे लेक्चर के दौरान आप मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया है तो आपसे वो मिस ना हो और आपके पास वो यहाँ पे आपकी बुक में मौजूद हो, ठीक है? सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।